Hello students, welcome to your marathon class number 3 for English grammar, and today I will be explaining to you, or we will be solving questions of fill-ups, then your jumbled sentences जो PQRS वाले होते हैं and para jumbles. आज के 3 हमारे टॉपिक रहेंगे जिनके ऊपर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and I hope you're following up on all your marathon classes because they are very very important. लास्ट मिनट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दिस इज द लास्ट स्ट्रेच ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन दैट इज कमिंग राइट अप. So you need to be very very careful and you need to be very precarious, very cautious, and also very very determined and focused that you are going to solve this examination with utmost sincerity and hard work. And if you want to do that, you really need to revise and check your performance with the help of mocks, right? So we are updating mocks, and you can buy the mocks for 99 rupees on our app, as well as the class PDFs. Even the marathon class PDFs are also available on the app. So if you need it for a revision, you can always go up to the app and purchase it for 99 rupees only. Look, we are giving you the entire course for free, so just 99 rupees for mocks, I don't think so is a very large amount of money. It is pretty affordable by all of us, right? And so you can do that. And also I hope that all of you are doing a lot of practice, whether it is about English or maths or reasoning or GS for that matter as well. All the 4 subjects require a lot of practice, a lot of persistence and hard work from you people, so you cannot back down on that. और लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, दिस इज द लास्ट स्ट्रेच, सो पुट योर एवरीथिंग इनटू इट, because believe me, if when you get the results, you will be the one who will feel very very nice about it, right? So do it for your own sake, do it because you want to feel nice. Okay, so let's start with today's class. In today's class we will be doing the topics of fill in the blanks, para jumbles, and jumbled sentences. These are a few topics that we will be dealing with today, so that you become more proficient in them, more efficient in solving these questions without getting any negative marks, right? Negative marks liye bagair you have to score this. And as you all know that English has come up to become a major chunk of the part of Afcat examinations, so you cannot ignore on it. You have to take care that you follow all the rules and regulations, and you take care that you look up to the rules of grammar, and then you follow them in the examination as well. You cannot, there is no scope of carelessness now. You cannot fall back down now, because this is it, this is the last leg. So give it your everything. Okay, so let's start. First question is on your screen. The two brothers look so dashed that it is difficult to differentiate between them. Okay, so this is the sentence, that it is difficult to differentiate between them. So you have to fill up this blank. These are the 4 options. You have to pick one option out of these 4 options. 4 options आपके सामने हैं. You have to pick one option out of these 4 given options. Same, similar, identical or alike. Which of these will be the answer? जब आपको फिलअप्स चूज करने होते हैं, मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया है, चारों ऑप्शंस को एक बार ब्लैंक में डाल के जरूर देखो. यू विल फिगर आउट द आंसर योरसेल्फ. ओके, मैराथन क्लासेस के एंड में खुद को मार्क भी क्या करो, और एनालिसिस क्या करो कि आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है. नोबडी नोज इट बेटर देन यू हाउ यू आर परफॉर्मिंग. हम लोग भी शायद इतना नहीं जानते होंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज सो कॉम्प्लेक्स, नोबडी कैन मेक आउट व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग. So you know your true self. You know if you're truly solving these questions or if you're cheating. So mark yourself accordingly. Okay, and if you are in fact cheating, then it is not cheating us, you're cheating your own self. So the answer for first question is the two brothers look so identical that it is difficult to differentiate between them. Alike, similar और same, चारों शब्द एक दूसरे के क्या हैं? Synonyms हैं. तो ऐसे तो कोई भी यूज हो जाता. नो, यू हैव टू लुक फॉर द बेटर आंसर, और अगर बेटर से भी ज्यादा, यू शुड लुक फॉर द बेस्ट आंसर. यहाँ पे बेस्ट सूटेबल इज आइडेंटिकल. नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज गुड डैश ओवर इंग्लिश एंड हिंदी. दिस इज नॉट मी, बिकॉज आई डोंट हैव whatever the
आंसर इज ऑन हिंदी. आई एम रियली बैड एट इट. मैं बोल सकती हूँ पर मुझे लिखनी नहीं आती बिल्कुल भी. It's been really long, 7 years since I appeared for my last Hindi examination. I don't even remember the spellings of a lot of things. देखो यहाँ पे क्या आएगा. You have four options given below. You have to pick one out of those four options. काफी आसान है. The answer is my friend has good command over English and Hindi. Language है ना ये. लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होती है. ओके. अथॉरिटी और एनी अदर वर्ड इज रॉन्ग. लैंग्वेज के ऊपर हमेशा हमारी कमांड होती है. एक अच्छी कमांड होती है. ओके. नेक्स्ट. एवरी वीक इन द ऑफिस 1 hour इज डैश टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स. चार ऑप्शन आपके पास हैं. यू हैव टू पिक वन ऑप्शन. द आंसर इज डिवोटेड. एवरी वीक इन द ऑफिस 1 hour इज डिवोटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स. डिवोटेड का मतलब कि उसके लिए स्पेशली ये वक्त निकाला जाता है. उस चीज को ये वक्त दिया जाता है. राइट. सो दैट इज डिवोटेड. डिवोटेड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड डिवोशन. और डिवोशन इज रिलेटेड टू गॉड. दैट इज व्हेन यू प्रे. तो आप भगवान से प्रार्थना के लिए समय निकालते हो ना. ऐसे ही डिवोशन से डिवोटेड लिया गया है. दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ डिवोशन. पास्ट फॉर्म है ये डिवोशन. राइट. Next, some people dash themselves into believing that they are the only honest and hardworking employees in the company. What will be the answer? You have four options. इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कई लोग दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो याद रखना है आपको. गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट आंसर ढूंढना है. सो कीप दैट इनटू योर ब्रेन. व्हाट विल बी द आंसर. काफी आसान क्वेश्चंस हैं. अगर आप यहाँ पे कर पा रहे हो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. द आंसर इज delude. Some people delude themselves into believing that they are the only honest and hardworking employees in the company. Delusion भी foolishness ही होता है. Somebody who is deluded is somebody who is foolish or somebody who is having a false hope. ओके. सो यहाँ पे कई लोगों ने फूल आंसर किया होगा मुझे लगता है. लेकिन ये आंसर नहीं है. आंसर डिल्यूड है. Next, the bus met with an accident and was dashed the traffic, so he had a hard time driving through the downtown. You have four options. You have to pick one.
द आंसर इज ऑब्स्ट्रक्टिंग. ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज के बीच में रुकावट बनना. इट्स लाइक एन ऑब्स्टैकल, राइट. रुकावट बन जाना किसी चीज के बीच में. सो जब बस का एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ट्रैफिक की, राइट. डेविएटिंग होता है किसी और रूट पे चले जाना. दिस इज नॉट द आंसर. ऑब्विएटिंग एंड हाइडिंग आर आल्सो नॉट द आंसर. द आंसर इज ऑब्स्ट्रक्टिंग. Next, his interest in the study of forensic pathology is indeed very dash. You have four options. You have to pick one. The answer is strong. His interest in the study of forensic pathology is indeed very strong. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसको इस चीज में, राइट. तो वो स्ट्रांग होगा. डीप, वास्ट या फिर वाइड इज रॉन्ग. Next, the thief had managed to dash on many occasions but was finally dashed by the police and put behind the bars. So these are your options. You have to pick one. दो ब्लैंक्स हैं, दोनों को ध्यान में रख के आपको आंसर करना है. एक ब्लैंक को देख के आंसर मत कर देना. ऐसा कई बार हम जल्दबाजी में कर देते हैं और फिर हमारे आंसर गलत हो जाते हैं. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. दोनों ब्लैंक्स को ध्यान में रखना है. So the answer for this is option 3. The thief had managed to escape on many occasions but was finally arrested by the police. चीट या रॉब नहीं होएगा. एब्सकॉन्ड होता है कि भाग जाना, लेकिन उसके आगे किडनैप्ड है. पुलिस किडनैप थोड़ी करेगी चोर को, पकड़ेगी ना. डिफेंड और एक्विटेड इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑल दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग. देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट, Rajesh, two of Dash brothers, play cricket, wishes to be a coach after his retirement. Rajesh, two of Dash brothers, play cricket, wishes to be a coach after his retirement. The answer will be Rajesh, two of whose brothers play cricket. उसके दो भाई खेलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है? Possession, which will be showed by whose. Okay. Next, the dash effect of suitably chosen books on children's minds should not be underestimated. Here are your options.
The answer will be baneful. The baneful effect of suitably chosen books on children's minds should not be underestimated. Next, the signals are dashed through the tower. Here are your options. The answer will be the signals are transmitted through the tower. Towers के बीच में जो signals होते हैं वो transmit होते हैं, transport नहीं होते, ना ही transfer होते हैं. Okay, they are transmitted. Next, the wrong values we impart to our children at home are solely to be blamed for the moral dash of the society. Here are your options. You have to pick one out of the four. The answer will be degradation, moral degradation. Okay. Next, even a dash glance will let you catch the mistake. You have to pick the answer out of the four options. Even a dash glance will let you catch the mistake. The answer will be even a cursory glance will let you catch the mistake. Cursory होता है मतलब एक सरसरी नजर मार देना किसी पे, ऊपर ऊपर से देखना. Next, dash students, whether from primary or secondary divisions, struggle to understand mathematics. The answer is a large number of. The नहीं आएगा यहाँ पे, a आएगा. A large number of students. Okay. Next, consumption of alcohol in large quantity dash judgment. These are your options.
आंसर इज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी इम्पेयर्स जजमेंट. इम्पेयर का मतलब होता है टू खराब जजमेंट होना, है ना. ब्लर्ड जजमेंट यू कैन से. A judgment which is not clear. Not clear. Okay. Next, the finance secretary dashed the NGO's funds, dash he was dismissed. दोनों फिलिप्स को ध्यान में रख के आप फिल करना. एक फिलिप को देख के फिल करोगे तो गलती हो जाएगी. The answer is the finance secretary misappropriated the NGO's funds, so he was dismissed. Misappropriate मतलब कि उसने उसमें fraud किया, कुछ गलत किया. Next, the rail ministry has tied up with corporates to dash cleanliness and hygiene at various railway platforms across India. These are your four options. The rail ministry has tied up with the corporates to motivate cleanliness and hygiene at various railway platforms across India. Okay. Next, I thought over this decision to a great length after we dash it the other day. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोग उलझेंगे क्योंकि बिल्कुल आपको लगेगा सारे ऑप्शन ही सही हैं. बट रिमेंबर यू हैव टू पिक द बेस्ट ऑप्शन. The answer is I thought over this decision to a great length after we discussed it the other day. About, regarding या on साथ में लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है. एक तो ये पुरानी हो गई बात, तो इसलिए ये पास्ट फॉर्म में आएगा. डिस्कस्ड. उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब आपको लगाने की जरूरत नहीं है. डिस्कस्ड अपने आप में एक कंप्लीट वर्ब है. नेक्स्ट, मदर वॉज डैश बिकॉज ऑल हर पेन हैड गॉन. डैश, दो डैश है, सॉरी. ठीक है, लास्ट में भी एक फिलअप है यहाँ. तो देखो क्या आंसर होगा.
Answer was the mother was distraught because all her pain had gone already. मतलब कि बहुत दर्द हो रहा था उनको. Okay, this is the meaning. The mother was distraught. Mother बहुत ज्यादा pain में थी क्योंकि उनका सारा जो दर्द था बढ़ गया था. Next, my coach is one of the best coaches. Dash. These are your options. The answer will be my coach is one of the best coaches that I know. One of the best coaches that I know. Next, it is dash if we can organize another tournament this week. You have four options. It is dash if we can organize another tournament this week. The answer is it is unlikely if we can organize another tournament this week. ऐसा होने की संभावना बहुत कम है. Next, there are large number of reasons which dash people to buy new things during the festive season. Here are your options. आंसर विल बी देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रीजंस व्हिच मोटिवेट पीपल. यहाँ कोई डिस्करेज मत कर देना, मोटिवेट ही होते हैं लोग. देखो फेस्टिव सीजन में हम कितनी चीजें खरीदते हैं, तो यहाँ पे मोटिवेट ही आएगा, डिस्करेजमेंट नहीं. नेक्स्ट, he has mental dash to carry out this job successfully. Here are your options. ये शायद कुछ लोगों के लिए टफ हो. द आंसर इज एड्रॉइटनेस. एड्रॉइटनेस का मतलब होता है स्किल, राइट. जबकि यहाँ पे प्री डायलेक्शन भी एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है कि कोई अनयूजुअल चीज जो आपको बहुत पसंद हो, कोई वियर्ड चीज है ना, तो ये आंसर नहीं होगा. ड्यूरेबिलिटी होता है द पावर टू रिमेन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ड्यूरेबिलिटी और एड्रॉइटनेस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा, बट दिस इज नॉट द आंसर. द आंसर इज एड्रॉइटनेस. परसुएजन होता है किसी को मनाना. ओके, दिस इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट, he's gone through a dash. He is not at all the same man as he was 10 years back. These are your options.
द आंसर इज मेटामॉर्फोसिस. ये वर्ड ना बटरफ्लाई के बर्थ साइकिल से लिया गया है. जैसे आपने देखा होगा जब बटरफ्लाई पैदा होती है तो वो क्या होती है, कैटरपिलर. एक कैटरपिलर होती है, उसके बाद उसका मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे वो दोबारा बटरफ्लाई बनती है. तो ये वर्ड वहां से लिया गया है एंड इट मीन्स समथिंग दैट हैज चेंज्ड. ओके. नेक्स्ट, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वेकेंसीज. हियर आर योर ऑप्शंस. ये एफकैट वालों को तो जरूरी करना चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, बिकॉज इतनी कंफ्यूजन रहती है कितनी सीट्स हैं, मेरिट के हिसाब से हमारा क्या बनेगा. यूर ऑलवेज अंडर सस्पिशन की क्या होगा. उनको तो डेफिनेटली करनी चाहिए डिक्लेयर सीट्स. द आंसर इज स्पेसिफाई. ओके, दे शुड स्पेसिफाई. डिक्लेयर और स्पेसिफाई में टाई था, लेकिन स्पेसिफिकेशन ज्यादा पेक्यूलियर है, ज्यादा माइन्यूट आंसर है, सो विल गो विद स्पेसिफाई. नेक्स्ट, one dark night the watchman dash passing by a day well. द आंसर इज हैपन टू बी. ये डे वेल में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, इसको वेल ही लेके चलना था आपको, कुएं के पास से ना, हैपन टू बी पासिंग बाय. ओके. नेक्स्ट, dialogue and the dash interchange of diverse ideas is the dash of democracy. So these are your options. You have to pick one. The answer is dialogue and discriminating interchange of diverse ideas is the epitome of democracy. Right? This is what democracy is. This is the meaning of democracy. Next, the referee allowed the teams to play on without blowing the final whistle. Dash, one of them scored a winning goal. Here are your options.
The answer is the referee allowed the teams to play on without blowing the final whistle until one of them scored a winning goal. Next, the fierce struggle for press freedom did not end dash was it any less diminished. Here are your options. The answer will be but. But will be the answer. Next. While we got independence from British rule on August 15, 1947, our country was still a dash of concrete constitution. You have to pick the options out of the four given options over here. The answer is while we got independence from British rule on August 15, 1947, our country was still lacking a concrete constitution. It will be past continuous. Okay, now we start with jumbled sentences. Here's the first one. I will not read it for you because अगर मैंने पढ़ा तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाए. और पिछले क्वेश्चंस में अब मैं आपको कम टाइम दे रही थी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा दूंगी so that you're able to do it well. Okay. मैंने आपको तीन तरीके सिखाए थे, या तो आप स्टार्टिंग ढूंढ लो, स्टार्टिंग कहाँ से होगी या कंक्लूजन कहाँ पे होगा, या फिर जो पेयर्स हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, यू कैन फाइंड आउट द आंसर यूजिंग एनी ऑफ दीज ट्रिक्स. The answer will be option B, 4132. पढ़ के देखो. Man is the only creature blessed with the power of laughter. अब यहाँ हमें स्टार्टिंग से हम कर सकते थे, फोर से ही स्टार्टिंग हो रही थी. मैन इज द फोर से स्टार्ट होने वाले हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो आप ये दो एलिमिनेट कर देते और इन दोनों में पढ़ते तो ये वाला ज्यादा बेटर था. दिस इज द ओनली सीक्वेंशियल वे. ओके, नेक्स्ट, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
The answer is option C, 1342. Photos which were submitted for the exhibition have been totally burnt in the fire last night. Next. The answer is option A. पढ़ के देखो. The dealer has agreed to supply the raw material worth rupees 5 lakh supported by soft term loans with a very low rate of interest. ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से सॉल्व हो जाता. नेक्स्ट. एक ही ऑप्शन दो बार ही आ गया ना. The answer is 4321. Everyone should note that request for change of position will be granted. Complementary pairs. Next sentence. The answer will be 2143. आप इसको पढ़ के देखो. The food poisoning occurred when meat of low quality was added in the food preparations. ये जंबल सेंटेंस के आंसर्स मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ. मेरे पास आंसर लिखे नहीं होते. मैं रोज ही एक्सरसाइज आपके साथ करती हूँ. तो देखो, if I can do it within like what, hardly 5 to 6 seconds. It's very easy to do अगर आपको एक बार तरीका आ जाए करने का तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The answer is third option. Facebook is a social networking service founded by Mark Zuckerberg with his college roommates. Next.
The answer is option A. Complementary pairs. A powerful device. यहीं से आंसर सॉल्व हो जाता. बी और डी वाला एक ही ऑप्शन. A powerful device exploded outside the station. Next. The answer is option A. The animals were fascinated by the children. Simple. Next question. The answer is option B. Complementary pair से किया है मैंने. Her job left her with little free time. Her job left her. इसी से कर लिया मैंने तो. E और D से. Next. देखो ऐसा हो जाता है. ओके. 90% केसेस में ऐसे ही होता है कि एक ही ऑप्शन होता है जिसको देखते ही आपका आंसर सॉल्व हो जाता है. Should look for that option. The answer is option B. She blamed the local jobless teenagers. Next. Next sentence. The answer is option C. Upbringing plays an important role in development. Next.
The answer is option A. The road is closed due to traffic. Next, the answer is option B. President was shot at uh, the close range. नहीं सॉरी, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ. आंसर सी होगा. द प्रेसिडेंट वॉज शॉट एट क्लोज रेंज. प्रेसिडेंट के साथ द लगना चाहिए. मुझे खुद ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है. एनीवे, देखो ऐसे गलतियां हो जाती हैं. मुझसे भी हो सकती हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एरिंग ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट. Answer is option C. Cigarette smoking leads to cancer. So no smoking. Whoever smokes, please quit it. Next. Answer is option B. Oblige me by keeping your suspicion to yourself. Next.
Answer is option A. An unexpected victory made him popular. Next. Answer is option B. Sam longed for the oblivion of sleep. Next. Answer is option C. She has a deep mistrust of strangers. Next. Answer is option A. They admired the rugged beauty of the coastline. Next.
Answer is option B. My dress was stained with turmeric. Next. Answer is option C. The police built up a picture of the incident. अब हम करेंगे पैराजम्बल्स. यहाँ पे S1 और S6 वाले सेंटेंस होंगे और ट्रिक्स और टिप्स वही हैं जो हमने PQRS में की थी. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को आपको ढूंढना है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दीज आर योर ऑप्शंस. यू हैव टू पिक वन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस. इसमें आपको शायद उनसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़े होते हैं क्वेश्चंस. सोच के आंसर बनाना. पैराजम्बल्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. RSQP. इसको हम पढ़ते हैं. Many scientists are working on safer and better ways to kill mosquitoes. Mosquito nets can be used for protection, but there is no sure way to protect everyone from their deadly bites. Mosquitoes have many natural enemies like bats, birds, etc. Bringing more of these animals into places where mosquitoes live and breed might help. This is a natural solution. Complementary pair थे Q और P. Q के साथ P सिर्फ दो ऑप्शंस में था, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट. तो अगर आप इनको पढ़ के देखते तो ये सीक्वेंस आपका आंसर बन जाता. ऐसे लगाते हैं एलिमिनेशन. एलिमिनेशन कोई जादू नहीं होता कि छिड़क दिया और लग जाएगा. एलिमिनेशन के लिए भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी. ऐसे ही एलिमिनेशन नहीं होती. नेक्स्ट. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. QP. ऐसा पढ़ के देखो. द स्पाइडर फेल सेवरल टाइम्स बट डिड नॉट गिव अप. It tried again and finally succeeded in reaching the top. The king learnt a lesson from the spider. He appealed to the people for help and collected soldiers to form a large army. Then he attacked his enemies repeatedly and did not give up hope by the setbacks in battle. At last, he won the battle and got back his kingdom. The supporting pairs are S and R.
एस और आर वाले दो ही ऑप्शंस थे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर देते। फर्स्ट और सेकंड में सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अभी हम इसको पढ़ के देखेंगे। अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री। It was not an easy job to cut down such a huge tree. It took them all morning. They did not know what to do with the roots. They decided to dig out the roots. The roots ran so deep that they were not able to finish the job by dusk. Complementary pairs यहाँ पे क्या है? Q and S. Q and S are your complementary pairs और Q और S वाला ऑप्शन ही एक था। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स से आपको इतनी मेहनत ही ना लगती। नेक्स्ट, द आंसर इज ऑप्शन सी। अभी हम इसको पढ़ के देखते हैं। A mob went berserk at the hospital near our home yesterday. This happened after the death of a 15-year-old boy. The boy had died on the operating table soon after being administered with anesthesia. The victim's relatives and neighbors clashed with the police. The agitators also smashed equipment and windows of the hospital. Work at the hospital stopped for the rest of the day. The complementary pairs are R and Q. और Q वाले दो ही ऑप्शंस थे, फर्स्ट और लास्ट तो आप एलिमिनेट ही कर देते और इसी से आपके आंसर सॉल्व हो जाते। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस। द आंसर इज ऑप्शन डी। अभी हम पढ़ के देखते हैं।
Children are not the only ones who can fly kites. Kite flying is a good leisure activity for parents too with their children. In some countries like Malaysia and Japan, there are kite festivals. Self designed kites are flown by experts during such times. These experts are mostly adult amateur kite flyers. The occasions are celebrated with dancing and music. यहाँ सॉल्व होना था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से जो कि आर ही हो सकता था. ऊपर वाले सेंटेंस में बोला कि सिर्फ बच्चे नहीं है जो काइट फ्लाई कर सकते हैं और सिर्फ यही एक सेंटेंस है यहाँ पे बोला गया है कि काइट फ्लाइंग पेरेंट्स भी कर सकते हैं. तो दोनों को जोड़ने वाला सेंटेंस है आर और आर से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर फॉर दिस सेंटेंस इज ऑप्शन ए. अभी हम पढ़ के देखते हैं. द मोटर कार इज वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस. It has made short and medium distance journeys fast and comfortable. Yet we cannot say that motor car is blessing without disadvantages. One of these is smoke and pollution it creates. The other is that it has made journey by road hazardous. Finally, in this age of energy crisis and environmental pollution, a motor car is not a desirable thing to maintain. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है हमारे पी और आर. पी और आर वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमें सिर्फ दो ऑप्शंस में देखने को मिलेगा. इन दोनों को तो आप एलिमिनेट ही कर देते. द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. आंसर इज ऑप्शन ए. पढ़ के देखते हैं. A mule began to daydream that he was a good runner as his mother was a racehorse. He started running across the field. When his master saw him running fast, he thought that his mule was a good runner. The master sat on the mule and whipped him hard as he was in a hurry to reach the market. Forced to run faster, the mule collapsed on the ground. He thought, though my mother was a racehorse, my father was only a donkey. This is a funny story. The answer is option A. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यहाँ पे आप स्टार्टिंग वाले कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उससे कर सकते थे. आर से स्टार्टिंग वाले तीन ऑप्शंस थे आपके पास. आप तीनों को सीक्वेंस में पढ़ते हो तो आपके पास आंसर आ जाता. नेक्स्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. The answer for this is option C, RQPS. पढ़ के देखते हैं. Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847. He was always an inquisitive boy.
He soon became fascinated with electrical currents. In 1869, he borrowed a small amount of money and became a freelance inventor. He created the world's first industrial research laboratory. He was indeed one of the outstanding geniuses the world had. Last question for the day. The answer for this question is option B. पढ़ के देखते हैं. Tired and injured from a shipwreck, Gulliver landed on the shores of Lilliput. ये स्टोरी सबने सुनी होगी. He fell unconscious after setting foot on the beach. The emperor of the land was informed. He planned to carry Gulliver to the capital city. The Lilliputians put an ointment on Gulliver's wounds. It alleviated all the pain and discomfort. Okay? ये जो जंत्रम मंत्रम करके मूवी आई थी ना एक, I don't know if a lot of people know about it, but the 90s kids I'm sure would know. वो मूवी इसी चीज के ऊपर बनी हुई थी. A lot of us had seen it. मेरे स्कूल ट्रिप लेके गया था उस पे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर. आई होप कि आज के तीनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं. फॉर 99 रुपीज यू कैन बाय द मॉक टेस्ट एज वेल एज इस क्लास की जो पीडीएफ है on the app. It is available for only rupees 99, right? And please don't forget to like, share and comment. अब बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, so please this is the only thing that we ask from you. आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, हमें अच्छा लगता है देख के. So please don't forget to do that, right? Thank you so much everybody and have a great day.